Supreme Court's verdict on same-sex marriage. Hi everyone. In this session, we are going to discuss in details about on Tuesday's verdict on same-sex marriage by Supreme Court. Not only that, we will go through into details about the same-sex marriages and the related constitutional provisions and the histories. So everything we'll discuss in this session. So on Tuesday, Supreme Court ruled that there cannot be legal recognition for same-sex marriages, doing so by a 3-2 majority. As many as 4 judgments were delivered and a slew of observations were made by the apex court. So remember, with a 3-2 verdict means जो मेजोरिटी का जो व्यू पॉइंट था वो legalization of same-sex marriage के against था. So that's why the apex court denied the constitutional validity to same-sex marriages, and it said that it is a statutory right but not a fundamental right. Therefore, it is a matter for parliament and state legislature to address through legislation. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेम सेक्स मैरिज का लीगलाइजेशन प्रोसीडियर है ये फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है. सेम सेक्स मैरिज का जो लीगलाइजेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, ठीक है. तो इसको ये मैटर को पार्लियामेंट और अपना जो स्टेट लेजिस्लेटर है उनको एड्रेस करना होगा. So Supreme Court ने ये जो matter है, it actually informed that this matter should be addressed by parliament and state legislature. तो अल्टीमेटली जो डिसीजन आया, डिसीजन का मतलब ये रहा कि अभी सेम सेक्स मैरिज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या तो आप बोल सकते हो लीगलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कारण ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है. ओके, now what are the other observations made? Aru kiki observation korile. The court can neither strike down nor reward into the Special Marriage Act SMA 1954 जितो हमार मेन मैरिज एक्ट है. जो इंडिया में जो सबसे जो मतलब जो मैरिज एक्ट है वो कौन सा है आपको याद होना चाहिए, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1954. तो क्या बोल रहे हैं कि द कोर्ट कैन नाइदर स्ट्राइक डाउन नॉर रीच वॉच इनटू द स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1954 to include the same sex members within the ambit of this SMA 1954. Only the legislature can do that. कोर्ट इनको क्योंकि कोर्ट अभी ये सेम सेक्स मेंबर्स को SMA के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, और ये सिर्फ कौन कर सकता है, ये लेजिस्लेटर कर सकता है. और वो कैसे कर सकता है, उनको क्या करना पड़ेगा, जो पुराने जो ये एक्ट हैं, राइट, इसको amendment करना पड़ेगा, right? Through an amendment only legislator can deal with this. The relationship of marriage is not a static one. Queer person have an equal right and freedom to enter into a union. However, there is no fundamental right to marry under the constitution. तो क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जो क्वीर पर्सन है, रिमेंबर क्वीर पर्सन मतलब हम ये LGBT क्यू कम्युनिटी जो है उनको ही बोलते हैं, राइट? तो क्वीर पर्सन का भी इक्वल राइट्स है, फ्रीडम है, वो एक यूनियन में एंटर करके इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम को या तो रिलेशनशिप ऑफ मैरिज को ला सकते हैं इसके अंदर, यूनियन के अंदर, ठीक है. हाउएवर कोर्ट ने ये भी बोला कि ये फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है. The court favored the government's proposal of a committee headed by a cabinet secretary to look into the entitlements for same-sex couples. Now, what are the views of Supreme Court judgment? First, we'll go through the issue, then minority view, majority view. Fundamental right to marry. Marriage may not be a fundamental right in itself, but has attained significance due to state regulation. Majority view क्या बोलते हैं? Marriage is not a fundamental right. ठीक है. Then interpretation of Special Marriage Act SMA. So our जो Chief Justice of India है, Chief Justice of India, Chandrachud, was against an expansive reading of the SMA and warned against the court entering the realm of the legislator.
मेजॉरिटी व्यू क्या है, SMA could not be interpreted to include same sex couple as it is intended for heterosexual couples of different faiths. तो जो SMA 1954 है उसमें हिटारोसेक्सुअल कपल्स ऑफ डिफरेंट फेथ मतलब हम देखेंगे अभी, ठीक है, SMA 1954 में क्या क्या है। तो इसमें जो है, इसमें हिटारोसेक्सुअल कपल्स को ही इंक्लूड किया गया है, होमोसेक्सुअल को इंक्लूड नहीं किया है। লাগিলে আপোনাৰ রিলিজন টু हिंदू হক, मुस्लिम হক, क्रिश्चियन विल गो टू देम, बट ओनली द हिटारोसेक्सुअल कपल्स। तो ये मेजोरिटी व्यू पॉइंट था कि सेम सेक्स कपल्स को SMA के अंदर इंटरप्रेट अभी तो नहीं कर सकते हैं। Queer couples' right to adopt a child, the CGI Chandrachud struck down certain CARA regulations, right? CRA regulations stating that they reinforce the disadvantage faced by the queer community. However, majority view upheld the CARA regulation, CRA regulation, and said that since same-sex couples' marriage is not recognized, they are not eligible for adoption. देखो जो एडॉप्शन है कौन कर सकता है, जो जिनका मैरिज, जिन कपल का सपोज बेबी जो है उनको एडॉप्ट करना है बिकॉज दे unable to go for a natural child or having a natural baby, so that's why they have to adopt it, right? तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, कपल्स होना चाहिए, मैरिज कपल्स। तो अभी जो है सेम सेक्स कपल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो वो लोग ये भी नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं है वो लोग एडॉप्शन करने के लिए, राइट? ये मेजॉरिटी व्यू ने कहा। Civil unions for queer couples, CJI saw that the right to form intimate association as part of freedom of speech and expression, and suggested a committee to determine the rights available to queer couples in union. तो यूनियन फॉर्म करने के लिए तो कहा गया है, CJI ने भी बोला कि यूनियन के जरिए वो लोग क्या कर सकते हैं कि उनका जो राइट्स होना चाहिए उसको ডিটাৰমাইন कर सकते हैं, ठीक है? তেওঁলোকৰ কি কুইৰ কপলছ বিলাকৰ কি ৰাইটস থাকিব লাগে এটো ডিটাৰমাইন কৰিবৰ কাৰণে এখন এক কমিটি ফৰ্ম करने के लिए सजेशन दिया गया है। However, the majority view disagreed with prescribing a choice of civil union, but also suggested that states should facilitate this choice for those who wish to exercise it. Now, same-sex marriage क्या है? ये समझ में आ गया, what we have discussed about the majority view, minority view. You got it? Now let's come to this. The same-sex marriage किसको बोलते हैं हम? Gay marriage या तो LGBTQ plus marriage. This is a legal union between two individuals of the same gender. मतलब मेल मेल, फीमेल फीमेल। तो ये जो सेम जेंडर है, उनके बीच जो मैरिज है उसको हम सेम सेक्स मैरिज बोलते हैं। ऑफ कोर्स इसको गे मैरिज या तो LGBTQ प्लस मैरिज भी बोला जाता है, राइट? इट ग्रांट्स देम द सेम लीगल राइट्स, बेनिफिट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ऑपोजिट सेक्स मैरिजेस, राइट? नाउ सिविल यूनियन क्या है? सिविल यूनियन ग्रांट्स लीगल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज to same-sex couples similar to marriage, but civil union lacks the same recognition in personal law. वो लीगल राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहे हैं, बट वो क्या नहीं कर सकता, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग इसको सेम रिकॉग्निशन नहीं दे सकते हैं। US, Sweden, this type of countries had recognized civil union until same-sex marriage was legalized in their country. Now, what is Special Marriage Act SMA 1954? ठीक है, हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, ये क्या बोलते हैं? Marriages in India can be registered under the respective personal laws like Hindu Marriage Act 1955, মনত ৰাখিবা সবে, Hindu Marriage Act 1955, then Muslim Personal Law Application Act 1937, or under the Special Marriage Act 1954. So ये सब एक्ट के अंदर हमारा इंडिया में क्या कर सकते हैं, कोई भी मैरिज को रजिस्टर्ड कर सकते हैं पर्सनल लॉ के रेस्पेक्टिव। Now, the Special Marriage Act 1954 has provisions for civil marriage for people of India and all Indian nationals in the foreign countries, respective of religion or faith, followed by either party. So, irrespective of religion or faith,
মনত ৰাখিবা ইয়াত আমি ৰিলিজন আৰু ফেইথৰ পৰা আঁতৰি পেলাই আমি কি ক'ব বিচাৰিছো যে मैरिज जो मैरिज हुआ है उनको रजिस्टर कर रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के आधार पे राइट तो मैं फिर से बोल देता हूं मैरिजेस इन इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी हो सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 या तो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी हो सकता है तो ये क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इनके पास प्रोविजन है किस लिए इट हैज प्रोविजन फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो irrespective of religion, faith, followed by either party. Now, when a person solemnizes marriages under this law, then marriage is not covered by personal laws but by special marriage. अब ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर अगर किसी ने सोलेमनाइज किया है मैरिज को तो वो मैरिज को कोई पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कवर नहीं हो रहा है अभी वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहा है क्योंकि पर्सनल लॉ तो या तो हिंदू मैरिज एक्ट आ जाएगा 1955 का या तो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऐसे ऐसे जितने भी हमारा जो बिलीफ फेथ उनके अकॉर्डिंग हो रहा है बट ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो आएगा वो इस पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं इस पार्टिकुलर मैरिज एक्ट के अंदर ही आएगा नाउ लीगल स्टेटस ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया अभी तो हमें समझ में आ गया कि इसको लीगलाइज नहीं किया गया बट फिर भी वी हैव टू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस नाउ इन इंडिया द लीगलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इज नॉट एक्सप्रेसिवली और इज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड as a fundamental or constitutional right but is governed by statutory law ठीक है statutory law तो है in 2018 the Indian Supreme Court decriminalizes same sex marriage पहले तो क्रिमिनलाइज भी मतलब सेम सेक्स कपल्स को क्रिमिनलाइज भी किया गया था पहले था क्रिमिनलाइज बट अभी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है कब 2018 में तो सबसे पहले जो ये है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 ओके सो इसको नालसा केस बोलते हैं हम लोग ये क्या किया रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स एज थर्ड जेंडर मन राखिबा एतु एटा प्रिलिम्सर क्वेश्चनो হ'ব পাৰে ट्रांसजेंडर बिलाকক केতিয়া थर्ड जेंडर हिसाबे रिकॉग्नाइजेशन करा हल तो याद रखना नालसा 2014 केस में ट्रांसजेंडर जितने भी ट्रांसजेंडर हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको रिकॉग्नाइज किया गया थर्ड जेंडर तो अभी फॉर्म में आप लोग देखोगे ये ऑप्शन भी आने लगा है देन केस पुट्टस्वामी केस 2017 very important case recognition of the right to sexual orientation as an aspect of privacy जब भी पुट्टस्वामी केस का नाम आया मनोत रखिबा सबसे इंपॉर्टेंट किया है तब प्राइवेसी इस बार भी एपीएससी मेंस ने पूछा था ठीक है तो पुट्टस्वामी केस में ये कहा गया कि रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन एज एन एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी ठीक है देन शाफिन जहान वर्सेस ए केस भी याद रख लेना इसमें क्या बोला राइट टू मतलब सिर्फ एक नाम याद रखना जहान ठीक है शाफिन जहान उतना क्योंकि सब तो आप लोग याद रखना मुश्किल है तो इसमें क्या बोला गया है कि द राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वन choice is integral to article 21 of the constitution तो ये पूछा भी गया है कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या आ जाता है अभी राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वन choice then Osokan came 2018 case the right to marry is intrinsic to the liberty granted by the constitution as a fundamental right allowing individual to make decisions crucial to their pursuit of happiness ये कौन सा केस है अशोकान केस है नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जब सेक्शन 3077 को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया मतलब जो पहले क्रिमिनलाइज किया गया था मतलब क्रिमिनलाइजेशन था ये होमोसेक्सुअलिटी अब इसको हटा दिया गया कौन सा केस में नवजीत सिंह जोहर केस में नवजीत सिंह जोहर केस very important the court ruled that the punishing sexual activity between the two consenting adults under section 377 violates the right to equality privacy and personal liberty of such person क्योंकि आप अपना प्राइवेसी के अंदर मतलब आप अपने पब्लिक स्पेस की तो बात हम कर नहीं रहे पब्लिक प्लेस को छोड़ के प्राइवेट प्लेस में आप किसके साथ सेक्स कर रहे हो मतलब आप अपना जो प्राइवेसी रख रहे हो वो आपके अंदर आता है क्योंकि ये पहले केस में दे दिया गया है पुट्टस्वामी केस में ये बोल दिया गया है सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक कॉन्सेप्ट और एक एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी है राइट तो ये आपका राइट है आर्टिकल 21 के अंदर ये भी बोल दिया गया है जिसको पर्सन किसी भी पर्सन को आप शादी करना चाहते हो वो अपना चॉइस है राइट टू
क्या बोल सकते हैं हम, मेरी ए पर्सन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। सिमिलरली लिबर्टी भी है, और साथ में पुट्टस्वामी केस में ये भी बोल दिया गया है कि ये एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी है। तो आप जो कर रहे हो प्राइवेट में, तो वो आपका प्राइवेसी का पार्ट है, इसलिए इसको हम सजा नहीं दे सकते हैं आर्टिकल हमारा सेक्शन 377 के अंदर, राइट। सो सेक्शन 377 violates the right to equality, privacy and personal liberty of such person having sexual activity with the consent to consenting adults. So those adults may be homosexuals also. So decriminalize homosexuality under this Navjit Singh Johar case 2018, and member of LGBTQ community are entitled to the full range of the constitutional rights, including liberties protected by the Constitution. They are entitled to equal citizenship and equal protection of law. आप दोनों साइड से अगर देखेंगे, सेंटर क्या बोल रहे हैं, सेंटर ये बोलते हैं, मैं ब्रीफली बोल देता हूँ कि जो मेरिज है एक लीगलाइज इंस्टीट्यूशन है, और मेरिज जो है इससे क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या बोल सकते हैं हम, जो एक कपुल है, कपुल इन द सेंस यहाँ हिटारोसेक्सुअल कर रहे हैं, लिविंग टुगेदर एज पार्टनर एंड हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप बाय सेम सेक्स इंडिविजुअल्स is not comparable with the Indian family unit concept of a husband and a wife and a children, which necessarily presuppose a biological man as a husband, as a biological woman as a wife, and the children born out of the union of the two. तो ये जो हस्बैंड वाइफ होगा, हस्बैंड एक बायोलॉजिकल मैन होना चाहिए, ऑब्वियसली वाइफ बायोलॉजिकल वुमेन होना चाहिए, तभी जाके एक चिल्ड्रन बोर्न आउट होगा, राइट। तब ही हम बोल सकते हैं कि वो एक अकॉर्डिंग टू द मेरिज है, मतलब लीगल जो हमारा मेरिज बोल रहे हैं हम लोग, उसके उस इंस्टीट्यूट के आधार में तभी हो सकता है जब बायोलॉजिकल मैन बायोलॉजिकल वुमेन ये दोनों हस्बैंड वाइफ होगा, राइट। तो ये तो सेम सेक्स में पॉसिबल नहीं है, तो ये सेंटर का कहना है कि इसी तरह ये वायोलेशन है। बट पिटिशनर्स क्या बोल रहे हैं, पिटिशनर्स ये बोल रहा है, द गवर्नमेंट्स पोजीशन इज curious given the Hindu Marriage Act itself wiped out several recorded Hindu tradition that existed prior to the codification. Whoever drafted the response also seems clueless about the 60 odd genders recognized in Hindu historical texts, not to mention it has failed to provide any textual basis prohibiting the marriage of these 60 odd genders. So 60 odd genders का marriage को prohibit करना, ये जो आलिया हमारा हिंदू ट्रेडिशन का टेक्स्ट में ये तो नहीं, यहाँ पे नहीं है, राइट। इस टाइप का मेंशन आप लोग दिखाओ, यहाँ पे प्रूफ कराओ। द प्रोजेनी आर्गुमेंट इज पार्टिकुलरली ridiculous because it implies any marriage torn out of biological offspring is not a marriage. तो ये पिटिशनर्स का रेस्पॉन्स है, गॉट इट। तो सेंटर्स का क्या कहना है और पिटिशनर्स का रेस्पॉन्स हमने देख लिया। इन शॉर्ट ये मान लो कि सेंटर ये कह रहे हैं कि जो मैरिज होना चाहिए वो बायोलॉजिकल मैन एंड वोमन के बीच ही होना चाहिए, तभी तो एक चिल्ड्रन बोर्न आउट होगा, नहीं तो हमारा जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है ऐसा कोई मेंशन है ही नहीं, राइट। कि सेम सेक्स में होगा तो होना चाहिए, क्योंकि तब तो बेबी बोर्न नहीं होगा। और सेम सेक्स वाले भी जो हैं उन लोगों का भी कहना है कि ठीक है, तो व्हाट मेरिज मतलब ऐसा ही नहीं है कि उसमें से चिल्ड्रन बोर्न आउट होना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, राइट। तो आप बहुत सारी चीज है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट you are trying to means impose something which is against your own what we can say, against your own treatment also. Because suppose you are imposing some contraceptive measures to limit the children's populations, so that is also a kind of what, क्योंकि मेरिज होने के बावजूद भी तो क्या हो रहा है, हम अपना जो पॉपुलेशन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरिज होना मतलब बच्चा पैदा करना ही है। तो बहुत सारे चीज इसके ऊपर आर्गुमेंट हुआ, तो मेन चीज है मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। तो ये भी दिखा दिया गया है कि बहुत सारे ऐसा काउंट्री है जिसमें सेम सेक्स को अलाउ कर दिया गया है। यहाँ पे ताइवान की बात कर यहाँ दिखाया गया है कि ताइवान इज द ओनली एशियन कंट्री टू हैव लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। और आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ हम सेम सेक्स मैरिज में ये बोल सकता है क्योंकि इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अगर सेम सेक्स को रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया गया है तो आर्टिकल 14, 15, 1921 का वायलेट होगा।
Because you see, the Article 14, what it says that we should have right to equality before the law. 15, right against discrimination on grounds of religions, race, caste, sex, place of birth. 19 means freedom of speech and expression. 21, protection of life and personal liberty. So non-recognition of same-sex marriages will violate this right. Then strengthening families, because marriage provides social and economic benefits to the couples and their families and benefiting the same sex individual as well. Then cohabitation as a fundamental right already acknowledged by Chief Justice of India as a fundamental right. So it is the government's obligation to legally recognize the social impact of such relationship. Then biological gender is not absolute. Since the biological gender is not absolute, the gender recognition is more complex than just one's genitals, right? There is no absolute concept of a man or a woman. Then global acceptance. मैं আগতেও কলো मैं पहले भी बोल दिया हूं कि बहुत सारे country है, right? Currently 34 countries where same-sex marriage is legal, including Australia, Finland, France, Germany, United Kingdom, United States of America. So there is a global acceptance on this. Now, what arguments against same-sex marriage? Belief, because many religious and cultural groups believes that marriage should only be between a man and a woman. Then procreation, because some argue that primary purpose of the marriage is the what? Procreation, having a baby, right? Same-sex couples cannot have biological children. Then against the nature, same-sex marriage is considered to go against the natural order of things. Then legal issue is also there, the contentious issues from such a marriage, such as inheritance, टैक्स, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब का क्या होगा, इनहेरिटेंस का क्या होगा, टैक्स, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब क्या होगा, ये सब this will come under the legal issues. Then adoptions, वो लोग adopt नहीं कर सकते, right? Adoptions by queer couples can lead to societal stigma, discrimination, thus negatively impacting a child's psychological well-being. इसलिए तब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि क्यों queer couples को adoption के लिए problem है, तो ये बोल रहा है अगेंस्ट. नाउ वे फॉरवर्ड क्या होगा, अवेयरनेस इंक्रीज करना पड़ेगा. द पर्पस ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स इज टू प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल sexual orientation and expand public opinion about the LGBTQI plus community. Because what happened, अगर society sense नहीं होगा, right, behavioral sense नहीं आएगा, तो हम सेम सेक्स को सेम-सेक्स मैरिज को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे. तो अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा. लीगल रिफॉर्म्स, अमेंडमेंट्स इन द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 to allow same-sex couples to legally marry and enjoy the same-sex rights and benefit as opposite sex couples. So opposite sex couples को जो बेनिफिट मिलता है, राइट्स मिलता है, सेम तभी मिल पाएगा जब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को अमेंड किया जाएगा, राइट, ताकि ये सेम सेक्स कपल्स को भी वहां इंक्लूड कर दे. The legalization of same-sex marriages requires a concerted effort from all stakeholders, including LGBTQI plus community, the government, civil society, religious leaders. By working together only, a more inclusive society can be created where everyone has the right to love and marry whomever they choose, regardless of their center. So, मैंने कहा है पहले भी आप लोगों को, ethics and law. कभी कभी एथिक्स को सेंस करना पड़ता है और उस एथिक्स के अकॉर्डिंग ही एक लॉ लाया जा सकता है. नहीं तो वो लॉ आपने ले आया, लीगलाइज कर दिया, पर सोसाइटी उसको मानेंगे ही नहीं, तो वो लॉ लाने का क्या मतलब, अगर वो सोसाइटी जिसके लिए लॉ लाया गया है वो ही नहीं मान रहा है. সোসাইটিটো যদি চেঞ্জ নহয়, সোসাইটিৰ ভিউ পইণ্ট যদি চেঞ্জ নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ লৰ কোনো মতলব নাই. ফাৰ্ষ্ট উই হেভ টু ব্ৰিং দ্য বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ, উই হেভ টু ব্ৰিং more and more adoption of the same sex and same-sex marriages. Then only it can be legalized, or you can say then only it can be included in some legal acts, or legal reforms can be done for amendments in different acts like Special Marriage Act 1954. So creating more and more awareness about this LGBTQ plus community and their rights, so that if society adopts them as the same like the ones of the opposite sex community, then it will be okay. Then it will be considered equal and it can be given the one legal right. So that is the viewpoint of our Supreme Court.
ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि वो फंडामेंटल राइट्स में अंदर नहीं ला सकते। इससे पहले जो हमारा लेजिस्लेटर है उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेशन हो गया, पार्लियामेंट, वो अपने हिसाब से चेंज ला के ही इसको अडॉप्ट करा जा सकते हैं, तभी इसको फंडामेंटल राइट के अंदर ला पाएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज करने में मना कर दिया है। वो मना कर दिया इन द सेंस दैट वो फंडामेंटल राइट के अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट से दैट सेम सेक्स marriage cannot be considered as the one under fundamental right. I hope each and every point what we have discussed is now clear to you. Now, if you want to know more, please comment. Okay, that's all for today. Thank you.